Assalamu alaikum. Today I am going to discuss the freshwater fishing methods, and this method include the pot net methods. Pot net is actually the modification of the pike net in which rectangular shape float sinkers have been replaced for the hoops. As you can see, this is the pike net, and in the pike net hoops are present, and this is the long lead, and these are the wings for deflection of fishes toward the main hoop. This pot net is actually the modification of this pike net. In pot net, floats and sinkers are present. Now, what is the function of the floats and sinkers? Here, floats are necessary for the floating or the for the floating of net in water. फ्लोट्स जो होते हैं हमेशा अपर सरफेस पे बांधे जाते हैं, और इनका काम ये होता है कि नेट को पानी के अंदर तैरता हुआ रखें। और जो सिंकर्स हैं ये हमेशा निचली सतह पे बांधे हुए होते हैं, और इनका काम ये होता है कि ये पानी के अंदर डुबा के रखें नेट को। In contrast to pike nets, pot nets are operated in deep water. ये आपको डीप वाटर के अंदर मिलेंगे। यहाँ इसका स्ट्रक्चर है। दिस इज़ द पॉट एंड दिस इज़ द funnel shape opening, and these are the vertical side walls, and this is the leader. The pot may be 12 meter with the top cover and the floor. Vertical sheets of netting are fitted at an angle in the width that they form pockets which serve as a non-returning valves against any fish passing through it. The purpose of the leader is to deflect fish from their intended path and guide them into the pot. Pot are effective in the rivers also for catching fish which can swim along the shoreline. This leader is used for the deflection of fish toward the pot, and these vertical side walls or wings are used to guide the fish toward this path, and these are actually hindrance to backward movement of the fish which are already trapped in the pot. Next are the pound nets. Although this basic plan is similar to the pot net, but with the exception occur here. Pound nets are present just a few meters above the surface of the water. These pot nets are not present above the surface of the water, but these are present below the surface of water, and pot nets are present just above the surface of the water. Pot nets are usually present in the water with the depth of 10 to 15 meters deep. Next type of the nets are the cover pots. This is the diagram of the cover pot. One end is narrower and the second end is wider. And this pot net cover pot is made up of wicker work. Wicker means बैत की रस्सी जो हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं. These are the rigid and made up of wicker work. Cover pots, they are large, cone shape, and they are open at both ends. They are effective in shallow and turbid water. Turbid water is not clear. A group of person wade through water. These pots can be used when a single person wade through the water, and every single person carry this single pot. The operator places the broad end at the top of the top net top at the bottom blindly and searches for fish far ahead. अब आप ये सपोज करें कि ये जो कवर पॉट है इसे ज़मीन पे ये पॉन्ड में उतर के कहीं पे भी ब्लाइंडली रख दिया गया. अब वहाँ पे ये एंड जो है ये जो पॉन्ड का बॉटम है वहाँ पे रखा जाएगा. ठीक है, ये जब रखा जाएगा और ये जो नैरो एंड है यहाँ से ह्यूमन बीइंग अपने हाथ के थ्रू सर्च करेगा फ़िश को. इसके अंदर जो फ़िश कैप्चर हुई होगी उसे देन यहाँ इस एंड से निकाल लिया जाएगा.
Next type of the net is the basket trap. These are the cylindrical or drum shaped portable baskets. These are placed in the water. और इसमें जो ये भी इसकी आपको वीडियो भेजी है आपके ग्रुप के अंदर, वहाँ से आप इसे चेक कीजिएगा। इसका एक एंड वाइडर होता है और एक एंड नैरो होता है। अच्छा, इसको अब जब डाला जाता है तो ये नैरो एंड से फ़िश इस बास्केट ट्रैप के अंदर एंटर होती है। अब क्योंकि ये नैरो एंड होता है और फ़िश इतनी वाइज नहीं होती कि वो इसको बैकवर्ड उसमें से बैकवर्ड वापस जा सके, इस ट्रैप में से बाहर निकल सके। ये ट्रैप्स जो हैं ये बेटेड भी हो सकते हैं, यानी इधर कोई ना कोई फ़िश फूड डाली भी हो सकती है, और नॉन बेटेड भी हो सकते हैं। Next type of the traps are the tubular traps. They are mostly used in the African rivers. They are funnel shaped. This is the shape of the funnel and this is the slightly curved. It permits the free entrance of the fish because it has wider mouth, but its bottom part is not wider. And when fish enters from wider part toward the narrower parts, it is not easy for the fish to escape this trap. As previous same with the previous trap, these may be baited or unbaited traps. Okay, next type of traps are the drop nets traps. A drop net consists of a scare net suspended by its corner by the hook tied at the top and attached to a pull. This is the scare shaped net, and this scare shaped net is attached with the at the top along with the hoops, and hoops are operated from either from shoreline or from the boats. It is pulled up and down from the bank of the water or from a boat or from the top of the tree overhanging along the bank. When it is pulled, the net forms a deep pocket. In this condition, you can see this drop net is pulled and it forms a packet or a deep pocket and this deep pocket holds the fish. In many Far Eastern countries, just like the China, Japan, etc., this net is operated in combination with the bamboo screen hauled like seen in a shallow pond or lake. अब इन कंट्रीज़ के अंदर इस नेट को ऑपरेट किया जाता है। इसमें बैम्बू स्क्रीन यूज़ की जाती है, ये इसको खींचने के लिए, होल्ड करने के लिए। दिस इज़ द बैम्बू स्क्रीन लाइक अ सीन। आगे एक आप और नेट की टाइप पढ़ेंगे, और ये यूज़ किया जाता है शैलो पॉन्ड में या लेक के अंदर। ओके, नेक्स्ट टाइप इज़ द कास्ट नेट्स। कास्ट नेट के अंदर ये नेट की, दिस इज़ द वाइडर एंड ऑफ द नेट एंड दिस इज़ द नैरोअर एंड ऑफ द नेट। अब इसके साथ ये कॉर्ड लगी हुई होती है। ये नेट बिल्कुल फैला के पानी के अंदर फेंक दिया जाता है, और जब ये इसके अंदर फ़िश आती है तो उसको यहाँ इस एंड से पकड़ के खींचा जाता है। जब ये खींचा जाता है तो ये वाइडर एंड जो है, जैसे एक पॉकेट बंद हो जाती है, ये पर्स बंद हो जाता है, ऐसे ही बंद हो जाता है। तो उसके जब बंद हो जाता है तो फ़िश वगैरह इसके अंदर जो इंटेंगल हुई होती है, फिर नेट को होल्ड कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। और ये जो कास्ट नेट है, इसके अंदर छोटी छोटी पॉकेट्स बनती हैं। ये सिंपल कास्ट नेट्स है और ये इसके अंदर ऑलरेडी पैकेट्स बनाए हुए होते हैं, पॉकेट्स होती हैं। लिफ्ट नेट आपको वी शेप ऐसे बैम्बू की स्प्लिट बैम्बू मिलेगा। इसके अंदर नेट इन्होंने लगाया हुआ होता है वी शेप। अब ये पानी के अंदर डाला जाता है और ये एकदम इसे यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करके इसे ऊपर कर लिया जाता है, तो इसके अंदर जो फिश सारी कैप्चर हुई हुई होती है वो निकाल ली जाती है। नेक्स्ट इज़ द डिप नेट। This is the type of the dip net in which two long bamboos are tied with each other at the angle of the 30. This is the longer one bamboo and its longer portion act as a handle. Now the net is held between these between the portion of these bamboo, and this type of gear is used for capturing fish in a small
or shallow water.